Today we will start electric dipole. Electric dipole shows many properties which we are supposed to study because this world is made of electric dipoles. What are electric dipoles? These are molecules, and there may be other things also. Anything which has got two equal and opposite charges, and the charges are at certain fixed distance. Distance भी कैसा होना चाहिए? Fixed. Then that makes a combination of two charges, and this combination we will call as dipole, electric dipole. Okay, तो इसके example देखिए. One example is NaCl. Na has got positive charge and Cl has got negative charge. Positive and negative develop Coulomb's force and they come towards each other. कब तक आएंगे एक दूसरे के पास? When boundary of this and boundary of this they come together. Will their center come at one place? Answer is no. They cannot come together because they cannot penetrate the atom inside. तो एटम का पूरा साइज, Cl एटम का पूरा साइज, Na का पूरा साइज कहाँ तक आएंगे? बाउंड्री तक. So there will be certain distance between their centers. दोनों के पास नेगेटिव चार्जेस भी है, दोनों के पास पॉजिटिव चार्जेस भी है. Na के पास एक्सेस पॉजिटिव है, Cl के पास एक्सेस नेगेटिव है. Na के पॉजिटिव का सेंटर हम कहाँ मानते हैं? उसके सेंटर में. और Cl के जो नेगेटिव फैले हुए हैं सिमेट्री के अनुसार उसका सेंटर भी कहाँ होगा? सेंटर पे. जैसे सेंटर ऑफ मास वैसे सेंटर ऑफ चार्ज. सो दिस इज नेगेटिव चार्ज हियर 1, this is positive charge here 1e, and there has to be certain distance. This, or there is a Coulomb force. Because of Coulomb force they remain attached. वो दोनों एक दूसरे से इतनी जोर से चिपकते हैं क्योंकि डिस्टेंस बहुत छोटा है, तो उनके बीच का फोर्स बहुत लार्ज होता है. Now, अब अगर हम इसको उठाएंगे तो ये साथ में आ जाएगा, and this makes one molecule. तो ये जो मॉलिक्यूल बना इसका डिस्टेंस Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कैसा हो गया? फिक्स्ड. Now it completes our definition. There are two equal and opposite charge, plus E and minus E. Equal and opposite charge fixed at a fixed distance. This makes a dipole. Okay, तो ये dipole कहलाता है. We will study characteristic of it. Okay, क्या सब मॉलिक्यूल डाइपोल होते हैं? तो हमने देखा मॉलिक्यूल्स दो तरह के हो सकते हैं. एक वो जो बिना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए, विदाउट अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड दे बिहेव लाइक ए डाइपोल. दिस NaCl. कुछ ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से ही डाइपोल जैसे बिहेव करते हैं और विदाउट दैट डाइपोल जैसे बिहेव नहीं करते. सो द वन विच बिहेव्स लाइक डाइपोल, H2O. Oxygen is negative, H is positive, and you all know it is 120 degree. तो 120 डिग्री तो दोनों H किस तरफ हो गए? एक साइड में. तो अगर हम पॉजिटिव का सेंटर लेंगे तो इन दोनों के बीच में कहीं पे आएगा और वो डेफिनेटली यहाँ पर नहीं आएगा. श्योर है ना? इसके बाहर आएगा. तो ये दोनों प्लस का सेंटर यहाँ पर आया बाहर, और नेगेटिव तो यहीं पर है, ऑक्सीजन नेगेटिव का सेंटर यहाँ पर आया. सो दिस इज ए परमानेंट एंड फिक्स्ड डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव. सो H2O बिहेव्स लाइक डाइपोल. ओके, ऐसे मॉलिक्यूल दो दे हैव कोवेलेंट बॉन्डिंग, दे आर नोन एज polar molecules. Polar molecule because they behave like a dipole. अच्छा, दूसरे मॉलिक्यूल्स देखिए. CO2, they are symmetrical. माइनस माइनस दोनों का सेंटर माइनस, प्लस प्लस दोनों एक दूसरे पर कोइंसाइड करते हैं. एंड व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम? 0. सो
नो डाइपोल और इनइफेक्टिव डाइपोल, क्योंकि उनके बीच डिस्टेंस नहीं है। अब हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी डायरेक्शन में किस पर फोर्स लगाएगा? प्लस में। तो ये जो प्लस था इस लोकेशन में, इसको ये खींचकर यहां तक ले गया। बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड positive charges are pulled. What happens to negative charges? They experience a force in opposite direction. तो ये नेगेटिव यहां आ गया, ये नेगेटिव यहां आ गया, दोनों थोड़ा सा लेफ्ट में आ गए। तो दोनों का सेंटर भी यहां से लेफ्ट में आ गया। यहां पर ये वाला प्लस इधर चला गया, माइनस इधर चला गया, एंड नाउ देयर इज ए डिस्टेंस बिटवीन द टू। डिस्टेंस आ गया। नाउ दे आर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, -2 + 2, and there is a distance between them. Now it has become a dipole. ठीक है? So without electric field there was no dipole with it, so we call it non-polar molecule. When it is exposed to electric field, it behaves like a dipole. So these are the two types of molecules which behave like a dipoles. Okay. Now this dipole, what do they do? Why we study them? We study them because this nature is made of dipoles. Okay. What do these dipoles do? Can they create electric field around them? Because if they create electric field, they will be able to apply force. Okay. What is the net charge on a dipole? They are equal, plus and minus, so net charge is 0. If the net charge is 0, then should they create any electric field? Answer is no. But what we find that they do create electric field. नेट चार्ज 0 है, फिर भी वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। कैसे बना लेते हैं, क्यों बना लेते हैं? द आंसर इज, द रीजन याद रखिए, द रीजन इज बिकॉज देयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर नॉट लोकेटेड एट वन पॉइंट, दे आर एट डिफरेंट पॉइंट। सो एट एनी पॉइंट अराउंड इट देयर इफेक्ट्स आर डिफरेंट। कूलम्स लॉ में इलेक्ट्रिक फील्ड Q/R² होता है। वी टेक एनी पॉइंट, the distance may be different from these two, and even if the distance is same, the direction will be different from the two. So electric field will be different, and there will always be a summation of the two. So dipoles always make a electric field, even if their net charge is 0. Okay, now we ask you a question: is it possible that there is a particle whose net charge is 0, even then it is making an electric field? What is your answer? Yes. Our answer is yes. If that particle is a dipole, if that particle is a dipole like sodium chloride, then its net charge is 0, but it is able to make electric field. तो टेबल पर रखा हुआ नमक क्या ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है? आंसर है नहीं बनाता। हम तो नहीं देखते बनाता है। क्यों? इधर हम क्या स्टडी कर रहे हैं? बनाता है। और हम देख क्या रहे हैं? नहीं बनाता है। क्यों? बिकॉज दीज आर थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स। Every molecules make electric field. One makes like this, one makes like this. Cancel. One makes like this, one makes like this. Cancel. So we do not see any electric field. Reason समझ में आया? But if we are able to single out a single molecule, it will make an electric field. Right? Okay. So this is a very small example. There may be macro examples. बड़ी-बड़ी चीजों के भी example हो सकते हैं. So what we are studying is the principle of dipole. भले छोटा हो, भले बड़ा हो. So dipole is able to make electric field, and now we will study how much electric field and dipole can make. The other property about dipole is, if we put it in an electric field, it starts rotating. It experiences a torque. It rotates and try to align itself along the electric field. यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, और यहाँ पर हमने ये एक डाइपोल को ऐसे रखा, तो हम देखते हैं इस पर एक टॉर्क लगता है और ये ऐसे आ जाता है। ऐसे रखा,
घूम के ऐसे आ गया, ऐसे रखा, घूम के ऐसे चला गया. It experienced a torque, rotation. So we will study how much torque it experiences. Now, if it experiences more torque, if it produces more electric field, we will say the dipole is very effective. This dipole effectiveness or the strength of dipole is again a measurable quantity. एक क्वांटिटी हम बनाते हैं जिससे क्या पता लगेगा कि इस डाइपोल की ताकत कितनी है, इफेक्टिवनेस कितनी है. जैसे CO2 हमने लिया बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के, हमको मालूम है उसकी कोई ताकत नहीं है. ठीक है, क्यों? डिस्टेंस ही नहीं है, तो टॉर्क बनेगा तो फोर्स बिटवीन द डिस्टेंस जीरो है, कोई इफेक्टिवनेस नहीं. ठीक है, लेकिन अगर हम H2SO4 लेते हैं और NaCl लेते हैं तो हमको मालूम है H2SO4 की ताकत ज्यादा होगी. क्यों? पॉजिटिव चार्ज कितने हैं? 2. नेगेटिव भी कितने हैं? 2. तो 2 चार्जेस ज्यादा फोर्स बनाएंगे घूमने के लिए, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे. सो देयर इज इफेक्टिवनेस ऑफ एवरी डाइपोल एंड वी हैव पुट ए क्वांटिटी, वी हैव थॉट ऑफ ए क्वांटिटी which will give the effectiveness or the strength of the dipole, and that quantity we call dipole moment. मोमेंट क्या होता है? अगर हम एक डाइपोल को ऐसा रखते हैं एंड इट ट्राइज टू रोटेट, तो हमने एक क्वांटिटी निकाली है रोटेशनल मोशन में. क्या? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस इज मोमेंट ऑफ द फोर्स. मास मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस इज मोमेंट ऑफ द मास. अगेन मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस इज मोमेंट ऑफ मोमेंटम. तो मोमेंट हर एक के साथ हमको जोड़ देना है when we multiply with the distance from the fulcrum or from the point of rotation. जब भी हम ये r का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको नई क्वांटिटी क्या मिलेगी? मोमेंट. सो डाइपोल को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, इट एक्सपीरियंस ए फोर्स हियर, इट एक्सपीरियंस ए फोर्स हियर एंड दिस रोटेट्स. ये देखिए, ये r पे डिपेंड करता है, राइट. सो ये जो उसकी स्ट्रेंथ होती है, इस वर्ड को हमने उसकी स्ट्रेंथ में इनकॉर्पोरेट कर लिया एंड वी कॉल इट डाइपोल मोमेंट. ओके, दोनों पोल का जो जो मोमेंट बनेगा दैट वी कॉल डाइपोल मोमेंट. ओके, नाउ हाउ डू वी मेजर डाइपोल मोमेंट? सो डाइपोल मोमेंट मेजर करने के लिए हमने क्वांटिटी बनाई, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल effectiveness of electric dipole is given by this 2QL. P is equal to 2QL. This is effectiveness. इसको आप इस तरह से सोच सकते हैं, L L plus Q minus Q. There is an electric field over here, uniform electric field. This will experience a force on this side, this will experience a force on this side. What is the torque made by this force? Answer is, this is electric field E, so the torque force is Q into E, the distance is L. QEL. This is the torque. Clockwise. What is the torque here? Again, force is Q into E. The distance is L, so the torque is again Q, E, L, and this is also clockwise. Since both are clockwise, they will be added up, and how much this comes to? Okay, we know that force is Q into E. We know that torque is force into
डिस्टेंस फ्रॉम रोटेशन, ये टॉर्क होता है। अब देखिए FQE डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कौन सा है? L और L। कितनी बार L आ गए? 2 बार। एक्चुअली ये क्या चीज है? तो इसमें से अगर हम ये बोलेंगे कि फोर्स किसके कारण लग रहा है, किसके कारण टॉर्क बन रहा है, तो हमारा आंसर है कि E तो फोर्स बनाता है, टॉर्क इसके कारण बनता है। टॉर्क कम बनेगा या ज्यादा बनेगा? एक डाइपोल को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, उसका टॉर्क कम होगा या ज्यादा होगा, ये किस पर डिपेंड करता है? आंसर है 2QL पर डिपेंड करता है। E तो हमने जो रखा सो रखा। सो टॉर्क के फॉर्मूले में F इंटू आर आया और टॉर्क यहां पर क्या बना? 2QL। अब इसमें ये इफेक्टिवनेस है डाइपोल की, बिकॉज दिस इज द फैक्टर विच डिसाइड्स हाउ इफेक्टिव और हाउ लार्ज विल बी द टॉर्क। तो E तो FR की जगह में कौन आ गया? ये 2QL। सो sorry, it's not required. This is QE, Q into R into E, like this. F is equal to QE, and this is R. Torque. So Q into R, ये किसके लिए है? डाइपोल के लिए। और सिर्फ लीनियर फोर्स बनेगा। कब बनेगा? when the charge is single point charge. For a single point charge there will be a force, QE, and because of that there will be a linear motion. If there is a dipole, then there will be a torque, and this torque will have the quantity Q into R, and anything multiplied with R we call it moment. ये QR, this QR is equal to 2QL, ठीक है? This 2QL is equal to Q into 2L. What is Q? The charge. What is 2L? The total distance between two charges. And what is this quantity? Moment of dipole, which is effectiveness of the dipole. अगर हम लेंथ को इंक्रीज कर देंगे, the torque will increase. Q को इंक्रीज कर देंगे, the torque will increase. So this quantity becomes the effectiveness of dipole, और इसका हमने नाम रखा dipole moment. Moment नाम क्यों रखा समझ में आ गया? Because there is a multiplication with the radius of rotation. Okay, so the effectiveness of electric dipole is given by this, where P. Dipole is always? No. If we place it in an electric field in this direction, now you see, this will experience a force in this direction, and this will experience a force opposite to electric field in this direction. Now it will go anti-clockwise. This is known as positive rotation, that was negative rotation. Okay, so where P is called dipole moment. Q is charge. दोनों तरफ के चार्ज मिलाकर 2Q चार्ज आप नहीं लेंगे, दोनों तरफ के चार्ज मिलाकर 0 चार्ज भी नहीं लेंगे। Q is what? Magnitude of either of the charge, कोई भी एक का, and this is to be multiplied with 2L. Distance between charges. Okay, now this is a new quantity now we are introduced with,
that is dipole moment. So, as any new quantity, we will study it. First, whether it is a scalar or vector quantity. Answer, it's a vector quantity. It has a direction because length has a direction. Now, what should be the direction of dipole moment? Answer, from negative to positive. That is the direction of dipole moment, from negative to positive. So this dipole I have made, this is the direction. तो ये डायरेक्शन कैसी है? उल्टी डायरेक्शन है मैथमेटिक्स से. मैथमेटिक्स में हमारी जीरो नंबर लाइन कैसे चलती है? टुवर्ड्स राइट, पॉजिटिव डायरेक्शन. सो we should always make direction according to positive direction. Okay, I will write it here. P is a vector quantity its direction is along the line from negative to positive. From negative to positive charge. So, as a tradition, as a custom, हम लोग अब से जो डाइपोल बनाएंगे वो इस तरह से बनाएंगे. We will put minus q here and plus q here. तो इसकी डायरेक्शन कौन सी हो गई? Along the line, माइनस से प्लस, जो हमारा नंबर लाइन होता है, going towards plus. So this is positive direction. तो अब से हम इस तरह से डाइपोल बनाया करेंगे. Now we will study, this is effectiveness and we have this formula, and what will be the magnitude of this? 2qm is the magnitude of it. Okay, now we will study the electric field which can be produced by a dipole. Okay, now when a dipole makes an electric field, there may be different positions of electric field. So positions कैसे? We will study in different positions. One is if the point is here, we want to study electric field, we want to study electric field, we want to study electric field, we want to study electric field. All these points are axial position point. Axial, this is axis, and all the points on it will have a position. Which position? Axial position. So we will say point on axial line. Okay, now if we want to study, here is dipole, this is dipole. If we want to study the electric field at a point on this line, this is known as equatorial line. So this position is equatorial position. This is perpendicular bisector, and any point on this will be equatorial position. So there are two clear-cut positions, one along the axial line, other along the equatorial line. Then we will study electric field at any general point like this. This is neither here nor here, so we will call it general location. So we have to study electric field in all these three states. Okay, so we will start with position 1, that is electric dipole when the point of study is on the axial line. Okay, इसको बनाते हैं. This is a dipole, minus q plus q. The distance is 2l. This is axial line. There is a point at position m. We have to find out electric field at m, and the same thing we will write here. M is a point on
XL line. M is a point on XL line at distance R from dipole. एक चीज याद रखिए, डाइपोल से जब हम डिस्टेंस लेते हैं तो वो डिस्टेंस माइनस क्यू से लेना है कि प्लस क्यू से लेना है? आंसर है इट शुड बी फ्रॉम द सेंटर, नाइदर माइनस क्यू नॉर प्लस क्यू. तो ये आर डिस्टेंस यहां से कहां से है? सेंटर से. राइट, ये सेंटर से डिस्टेंस है, प्लस क्यू और माइनस क्यू से नहीं है. लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बनाता है? पॉइंट चार्ज, एंड द पॉइंट चार्ज इज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू. So when we apply formula for electric field, that is Q upon R square, then which Q we should take and which R we should take? The answer is we should take this Q, and this is the distance we should take, the distance from charge to that point. And this distance, how much is this here? Answer, this is R minus L. What is the distance of minus Q from this point? Tell me. ये distance कितना है? From this point to this point it is R and this is L. R plus L. ठीक है? Okay. Now, electric field due to plus Q. This is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square. Right? Distance for plus Q. How much is this distance? R minus L. So this is R minus L square. What is this distance? Very good. So this will be R plus L square. Difference आया? There is one thing more. This charge is negative. So along this line we can put a minus over here. If you want to, you can put a minus. Other, you will have to make a minus because the direction of electric field due to plus Q and due to minus Q are opposite to each other. तो आप चाहें तो दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड को नेगेटिव साइन लगाकर ऐड कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो बिना नेगेटिव साइन के give an argument that one is in this direction, other is in this direction, and therefore it will be subtracted. But finally, operation कौन सा होगा? Subtraction. Net E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q. Then what we get here is 1 upon R minus L square minus 1 upon R plus L square. This, okay, this is equal to Q upon 4 pi epsilon naught, और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे मैथमेटिकली, what you get here is denominator R square minus L square. Numerator, this will come here. And this will be
L. I will write it this way: 2QL into 2QL into R. 4QL R upon 4 pi epsilon naught अब देखिए ये 2QL क्या होता है? P. 2QL is P. So we will write it P. So this is 2PR divided by 4 pi epsilon naught R square minus L square to the power 2. Again, net electric field E is equal to 2P R upon 4 pi epsilon naught R to the power 4. L is very small compared to R, so L square will be further smaller than that. So we can neglect L square compared to R square. So R square minus L square to the power 2. This will be a very, very small quantity of L which can be neglected, and that will be almost equal to R to the power 4. And here we give the reason: L is very small compared to R. ठीक है, और उसकी पावर 4 हो जाएगी. That will be very, very small. इसलिए हमने उसको नेग्लेक्ट कर दिया. अब इसमें एक R को आप कैंसिल कर सकते हैं. And now we get the final formula, which is very simple. That is 1 upon 4 pi epsilon naught. इसको आप सब पहचानते हैं. Coulomb's constant. So this will be 2p upon R cube. This is electric field on the XL line. Electric field on the XL line. Now, what should be its direction? देखिए डायरेक्शन, देखिए इसमें इनमें से इस Q ने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बनाया है. किस डायरेक्शन में? तो आंसर है इसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया प्लस यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा इस डायरेक्शन में, और माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा इस डायरेक्शन में. Which electric field is stronger? तो आंसर है whichever is near, that will make a stronger field. Simple. दोनों चार्जेस तो इक्वल है, Q and Q. तो स्ट्रॉन्ग कौन बनाएगा? जो नजदीक है. कौन नजदीक है? प्लस. इसलिए किसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा? प्लस का. और प्लस के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? Towards right or towards left? Towards right. Therefore, this resultant will be in which direction? Right or left? Right. तो रिजल्टेंट किधर आएगा? Towards right. लेकिन हम उसको राइट और लेफ्ट नहीं लिख सकते. कोई किसी ने अगर ऐसा प्लस बना दिया तो So we give it another name. यहाँ पर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कौन सी है? राइट की लेफ्ट? डाइपोल मोमेंट किधर से किधर होता है? आंसर है डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम माइनस टू प्लस. सो हियर the direction of dipole moment is right and the direction of electric field is right. So we can say the direction of electric field is along the direction of dipole moment. अब अगर कोई ऐसा उल्टा करेगा तो dipole moment भी इधर हो जाएगा और electric field भी इधर हो जाएगा. So direction along P. Direction of E along P.
ठीक है, इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दिस एंड दिस. So this is electric field due to axis. अब देखिए, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है? आंसर है नो, इट हैज ए सर्टेन क्वांटिटी. तो जिस तरह से चार्ज से, सिंगल चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, डाइपोल से भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है. व्हाट इज द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड मेड बाय ए चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड मेड बाय ए डाइपोल? The difference lies in denominator. Yeah. E due to point charge is proportionate to R square. E due to dipole अब बताइए मुझे, if there is a electric field here, I make the distance 3 times. If it is a point charge, the electric field will decrease. How many times? Distance कितना times हो गया? 3 times. Put it 3. कितना हुआ? 9 times. So the electric field will decrease 9 times. ये है 1/r square. Okay. फिर से, in place of point charge, now I place a dipole here. Dipole रखा, the distance here, there is certain electric field, E. I increase the distance 3 times. The electric field decreases. How much? Yes, 1/27. और point charge में कितना डिक्रीज हुआ था? 1/9. और इसमें 1/27. दिस इज द डिफरेंस कि डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत लोकलाइज्ड होता है और बड़ी तेजी से डिप्लीट हो जाता है. थोड़ा सा दूर जाओगे, खत्म, क्योंकि उसकी पावर कितनी है? 3. सो इसके लिए आप एक शब्द याद रखेंगे, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल डिप्लीट्स फास्टर. आपको मालूम, समझ आया? So this was electric field on the XL line. Now next we will study the electric field when the point is on the equatorial line. This is the dipole, -q plus q, 2l is the distance. There is a point M on perpendicular bisector. So such position will be known as equatorial position. The distance of this point M from the center of dipole is r, so we will call a distance is r. This distance is L, and these two triangles are isosceles triangles. Sorry, not isosceles, similar triangles. If this angle is theta, then this is also theta. This triangle is isosceles. These two sides are equal. And how much is the distance this? Okay, Pythagoras, this is known to you. Now we start finding electric field at this point M. How we can find it? Answer is, we know only one formula, electric field due to point charge, Q/R square. We will apply the same. Okay, so E due to plus Q is equal to 1/4πε0 Q/R square. What is the R between plus Q and this? We will make square of this, so this will be R square plus L square. That's all. What should be its direction? Due to positive charge, direction is repulsive. So along the line, therefore this vector
This represents E due to plus Q. Correct? Now, next E due to minus Q is 1 upon 4 pi epsilon naught. Again, Q upon this distance is same. So this will be R square plus L square. Now, what will be the direction of electric field due to minus? Yes, the field approach towards minus, or the force is attraction. So, this. How long this will be? Answer, same. Why same? Because both these quantities are same. Therefore, magnitude will be same. So, this represents E due to minus Q. Okay. Now, what we have to find is resultant E, net E. Now, these two are vector quantities. So, how to find the resultant? One thing we know that E due to plus Q and E due to minus Q. If we make their magnitudes, then they are equal. Direction wise different, magnitude wise they are equal, and let's call them E. ठीक है? तो ये दोनों लाइंस की लेंथ कितनी है? E and E. Now how to find the resultant? Resultant we have two methods to apply. One is parallelogram and another is components. So let's go for component one. Component से हमने बनाया तो yes, this E has two components. One is in this direction and other is in this direction. So these are the two components of E due to plus Q. Okay, how much is this? We have to find out angle first. Let's draw a line here which is parallel to this. This is the line which is parallel to this. If this angle is theta, then this angle will also be theta. Okay? Two parallel lines. Now, see here, if this angle is theta, then how much is this angle? Theta, because the distances are same, perpendicular bisector. If this angle is theta, how much is this alternate angle? Again, theta. So this is also theta and this is also theta. These two and these two are equal and these two are equal. So these two are also equal, theta and theta. Okay, now if this is theta and theta, then you can tell me the component. How much will be this component? Along theta, this component is E cos theta. And how much is this component? E sin. Now, we will make component of this E due to minus Q. The components of E due to minus Q will be again, one is this component and one is this component. This. Okay, this is theta. So how much will be this component? And this will be E sin theta. Now, E and E are equal, theta and theta are equal, so these two components are equal and opposite to each other, they will cancel each other. But these two will not be able to cancel each other, so they will add up and we get this as resultant. Okay, so we will write here.
E cos theta. Now we are in a position to replace the value of E with this. E due to, and both have got same magnitude. तो ये magnitude हमने यहाँ place कर दिया. So how much will be this? 2. E की जगह क्या लिखना है? 1/4 pi epsilon naught Q upon Q upon R square plus L square. This. ये किसके आ गया? E. Then we have to write cos theta. Cos theta, we will see by geometry here. Cos theta is base upon hypotenuse. So cos theta will be L upon R square plus L square to the power half. Again, R square plus L square here has power 1, here it has power half. So both together will make power 3/2. R square plus L square. Here 4 pi epsilon naught Coulomb's constant. 1/4 pi epsilon naught. Then 2 into Q into L. 2QL. इसको आप पहचानते हैं. What is this? P. Okay. So our next step. Electric field E is equal to 2QL. 2QL makes P, and here we have 4 pi epsilon naught. 4 pi epsilon naught and R square plus L square to the power 3/2. This is our actual expression of electric field. But again, we go by approximation. If R is very large compared to L, then we are in a position to neglect L. Multiplied by 3/2 is 3. So what we get is P upon RQ. Now make the difference between the two. XL पर कितना था? Okay, पहले एक चीज और कर लेते हैं. What is direction of this electric field? This direction minus to plus we call along P, but its direction is opposite to P. So what is its direction? Direction of E in equatorial position. Is opposite to P. ठीक है? Yeah. So this we found here. Now compare with that. If we have placed the point M at a distance R in equatorial position, in axial position, and distance R in equatorial position, where electric field will be stronger. दोनों को देखिए. यहाँ से R डिस्टेंस पर हमने M को रखा. यहाँ से R डिस्टेंस पर इतना ही डिस्टेंस लिया, R डिस्टेंस, यहाँ M को बनाया. तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E एक्सल और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वेटोरियल, कौन सा स्ट्रॉन्ग? Very good. How much is this? 2. 1/4 pi epsilon naught P upon R cube. How much is this? 1. 1/4 pi epsilon naught P upon R cube. So
XL is double of E equatorial. समझ आया? तो एक्सल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, इक्वेटोरियल में वीक होगा, एंड दैट विल बी हाफ. ओके, ये याद रखिए. और दोनों अपॉन आर क्यूब है, so both will deplete faster. So these are the two positions. Now the question is, if we have to consider a point which is neither on axis nor on equatorial line, but at any general position, और कहीं भी तो हो सकता है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बनेगा? So let's now make that. E due to dipole at any general position. ओके, जनरल पोजीशन हम ऐसी बनाते हैं, थोड़ा सा लार्ज L from the center. Here is a point at distance r, and we have to find out electric field at this point. Now this makes an angle theta. I will draw it again. This is the dipole. This is point M. This is angle theta. Okay, so what is given to us? M is a point at distance r from the dipole, and the position vector r makes angle theta with direction of dipole moment. ये dipole moment की direction है, उससे r कितना एंगल बना रहा है? Theta. This is our position, so we will write it here. M is a point है theta. Okay. Now, dipole moment P is a vector quantity, and we have a knowledge that any vector quantity can be divided into two components in different directions. तो ये जो P है, this P we divide into two components. One component is at angle theta to it, तो यहाँ से ये हमने लिया perpendicular. So this वेक्टर, देखिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करता है? P को. तो ये थीटा एंगल पर हमने इसका प्रोजेक्शन बनाया, दिस एंगल, दिस वेक्टर. सो व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस वेक्टर? आंसर P cos theta, represented by this vector. Okay, now another vector, let us say that is perpendicular to this 90 degree. What is represented by this vector? Okay, यहाँ से हमने ऐसे लिया, यहाँ
से ऐसे दिस। This is P cos theta and this is P sin theta। फिर से ये वाला वेक्टर कौन सा है? P। थीटा के साथ बनने वाला कंपोनेंट P cos थीटा और इसके परपेंडिकुलर बनने वाला P sin थीटा। ठीक है? So what we are planning to do, we will find electric field due to P cos theta, we will find electric field due to P sin theta and we will add them। क्यों ऐसा करना चाहते हैं? इसलिए क्योंकि हमको उनका फॉर्मूला मालूम है। पिछली बार हमने क्या किया था? पॉइंट चार्ज के फॉर्मूला से हेल्प ली थी। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल के फॉर्मूला से हेल्प लेंगे। ओके, नाउ दिस पॉइंट M, बाकी सब भूल जाइए। ये ग्रीन वाला डाइपोल देखिए, दिस डाइपोल कौन सा? P cos थीटा। P cos theta is this and P sin theta is this। ओके, P cos theta के लिए पॉइंट M की पोजीशन क्या है? एक्सल की इक्वेटोरियल? एक्सल। कितना दूर है ये यहां से? R। ठीक है, तो एक्सल पोजीशन पर R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? वी नो इट। सो अब ये वाले पॉइंट यहां लिख लेते हैं। P is resolved in two directions। इन दोनों डायरेक्शंस को क्या कहेंगे? वन along R। along R में कौन सा कंपोनेंट मिला? सेकेंड नॉर्मल टू R। ये कौन सा कंपोनेंट मिला? P sin थीटा। ठीक है, अब P cos थीटा, P sin थीटा। M is on XL line of P cos theta। Therefore, E is equal to 2P। ये देखिए, एक्सल लाइन के फॉर्मूले में कौन आता है? 2। उसके बाद डाइपोल मोमेंट। हम कौन से डाइपोल मोमेंट को यूज कर रहे हैं? P cos थीटा को, और नीचे RQ। दैट्स ऑल। फिर M is on equatorial line of P sin theta। So ये how much will be this? P upon RQ। और यहाँ पर P क्या लेना है? sin theta and this here will be 1 upon 4 pi epsilon naught। So this is E due to equatorial line। अब इन दोनों का वेक्टर ड्रॉ करते हैं। एक्सल लाइन पर E की डायरेक्शन किधर होती है? along the line, along the P। तो ये यहाँ पर ये P की डायरेक्शन है, तो ये इसकी डायरेक्शन है। ये क्या है? E along एक्सल लाइन। ओके, इक्वेटोरियल लाइन पर P की इक्वेटोरियल लाइन पर E की डायरेक्शन क्या होती है?